well. Asim Waqar of the AIMIM also now joining us on the broadcast. Good to have you on the broadcast with us. Your first reaction to the developments that have just played out. You've got Raja Singh once again being booked, and this time under the Preventive Detention Act. नहीं मैडम, थोड़ा सा राजा सिंह के बारे में रिसर्च कर लीजिए कि हुज दिस, ये क्या है, क्या करता था। देखिए, राजा सिंह ने जब 2008 में विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा तो उसने अपने पर्चे में खुद डिक्लेयर किया कि उसके ऊपर 43 मुकदमे हैं, जिनमें से 17 या 16 मुकदमे धार्मिक भावनाएं भड़काने के, दंगा फैलाने, आगजनी करने के। 43 कब? 2008 में। क्या चल रहा है? 2022, जिसमें से 17 मुकदमों में आपके चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। शरीफ आदमी नहीं है वो। उसकी वजह से न जाने कितनी बार दंगे हुए हैं, न जाने उसने कितने लोगों को बेघर किया होगा। आगे मतलब उसने कई बार ऐसे बयान दिए हैं, उस पर मुकदमे हैं कि वो उसने लोगों से कहा कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तलवार पकड़ के सड़क पे निकल आओ। अब ये बताइए, आपके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप मेरे हिसाब से क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो बोल ही रही हूँ कि जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अगर कोई भी अपने हाथ में लॉ को ले रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। पर अगर यही यार्डस्टिक हम सबके लिए फॉलो कर रहे हैं तो सही है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये यार्डस्टिक सिर्फ बीजेपी के लोगों के लिए खड़ी क्यों हो रही है और एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स जिन्होंने काफी कॉल्स करी हैं बिहेडिंग के लिए पब्लिकली, उन पे कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं मैडम, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस दिन ये मामला आया उन्होंने कहा नहीं, हम इसका निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए। देखिए, संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है वो दिया है, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हम एजिटेशन कर सकते हैं संवैधानिक दायरे में। उस संवैधानिक जो प्रदर्शन है उसमें असंवैधानिक, इलीगल किसी तरह का कोई स्लोगन, नारा नहीं लग सकता। हम निंदा करते हैं इस बात की, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम कब कह रहे हैं कि होना चाहिए? नहीं तो सिर्फ निंदा क्या काफी है? क्या कोई एक्शन आप लेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने राजा सिंह की जो आज मैंने बताया अभी आपको कि 43 मुकदमे 2008 में उसके ऊपर थे, जिसमें से आगजनी, भड़काना, दंगा, फसाद, मतलब वो ये कह रहा है कि तलवार लो, सड़क पे निकल आओ। आपने दिखाया टीवी पर अपने। सर, अगर आप पूरा शो देखें, सर आप हर बार आते हैं, आप काउंटर क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप गोल पोस्ट बदलना चाहते हैं, आंसर नहीं देना चाहते हैं। अगर आप शो शुरुआत से देखते तो हमने शुरुआत में ही बोला है कि राजा सिंह के ऊपर ये कोई पहला केस नहीं है, उनके पास पहले भी केसेस हो चुके हैं। और हम तो ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से सस्पेंशन नहीं, एक्सपेल कर देना चाहिए। पर मैं पूछ रही हूँ, अगर हम बीजेपी से ये सवाल पूछ रहे हैं तो आपसे भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप अपने कॉर्पोरेटर पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? एक सिंपल सा सवाल है ये। निंदा तो आपने कर दी है, पर क्या कोई एक्शन होगा? मैडम, जिस आदमी पे 2008 में 43 मुकदमे थे, दंगा भड़काने के, आग लगाने के, दूसरे धर्मों को बुरा कहने के, गाली बकने के, उसको बीजेपी टिकट दे रही है और जिता रही है और असेंबली में अपना फ्लोर लीडर बना रही है। वो आप बता रहे हैं कि बीजेपी कर रही कार्रवाई। कहाँ कर रही कार्रवाई? सर, ये तो बहुत कन्वीनियंट हो गया ना। देखना चाहता हूँ, बहुत कन्वीनियंट हो गया। मैं तो बोल ही रही हूँ कि बीजेपी से सवाल किए जा रहे हैं, या तो आप समझ नहीं रहे हैं या आप मुझे क्लियर आंसर अपने पार्टी का नहीं देना चाहते हैं। पर आप 30 सेकंड रुकिए, बने रहिए हमारे साथ। वी ऑल्सो हैव बच्चू श्रीनिवास ऑफ द TRS now joining us on the broadcast. Your first reaction to what has played out? You've got Raja Singh once again being booked as far as the police is concerned, and this time under the Preventive Detention Act. Hello. Can you hear me, sir? Yeah, now I can hear you. I was asking your first response to what has played out once again. You've got suspended BJP MLA Raja Singh being booked once again. Definitely, see, it is going to take action by the police people, and the government will take its own action. Law will take its own action. If he'll do any kind of provoking, controversial statements, definitely he'll be taken into the custody. That is what exactly is happening in Hyderabad. A lot of questions, sir, at this point are also being raised as far as the role of the state government is concerned. Only yesterday we saw this, officials on the ground actually take a stern stand
vis-a-vis the protesters. A lot of questions being raised as to how these protesters even got bail so early. Even for your kind consideration, the protesters from any party, that may be any religion, I hope already you have received information about Hyderabad. All the Protestants from all the regions have already taken into the custody. This is for your kind consideration from the CNN news to everyone. Today, the nation is looking about Hyderabad. Are you getting me? Okay. No, for all your questions, whatever the questions are raising about Hyderabad, we are telling you on behalf of the government and the police of Hyderabad, we arrested from all the communities, all the religions. There is no caste. I didn't even ask a community question, sir. I don't think you heard me right. I never asked a community question. I just asked, what about the protesters? What took the delay as far as acting on those protesters? I didn't even mention anything about community. The protesters. I'm telling about the protesters only. The protesters are in the custody only. We never encourage, we never allow any kind of violation in Hyderabad. We take care of the safety of Hyderabad. Okay, I'll just request you to stay on with us. Let me take in a reaction from the Congress also. Naseer Husain of the Congress now joining us. Sir, your first reaction to what is played out. Raja Singh has been booked once again under the Preventive Detention Act this time. Mr. Raja Singh has been an habitual offender. This is not the first time that he has tried to offend any community. This is not the first time that he has tried to disturb peace and calm in the city of Hyderabad and Telangana. I think people like Raja Singh and anybody for that matter, whoever he or she is, from whichever party he or she is, or whichever ideology they belong to, they cannot take law into their hands. They cannot make provocative statements. They cannot divide the country by provoking people from both the sides. See, this is what has been happening. If the law and order is strict, if the law and order takes its due course, I don't think these kind of elements can survive. I am totally with the law enforcing agencies. Anybody who obstructs law, anybody who deliberately provokes people, anybody who deliberately tries to divide people, whichever community he or she is, should be booked and playing law and conduct. Sir, I'm glad that you're saying that it should be across political parties, but what we're actually seeing play out on the ground is slightly different. While we're all condemning what has been said or done by Raja Singh now or even in the past, we've also accessed an audio clip where there is a conversation between Assuddin Owaisi and one of the protesters, where the conversation is that Assuddin Owaisi is telling the protester, it's late in the night, you should go home then. There is also a video of an AIMIM corporator making these beheading chants and calls in public, but still no action has been taken. I made it very categorical when I said that anybody from any community, from any people subscribing to any ideology, any political party, should be taken to task if they are disturbing peace, law and order in any state, whoever it is. So if there are FIRs, if there are complaints against people from AIMIM, against people from other political parties also, I think they should be taken to task because what is more important is you cannot deny anybody the right to protest. But at the same time, you should also be careful that people those are going overboard, making provocative statements. When I say provocative statements, from all hue and cry, from everyone, from every community, from every party, they should be taken to task by the state government. Okay.